चलते हैं मिस्टर श्रीशंकर के साथ बात करते हैं और एक्चुअली एग्जैक्टली आपका आउटलुक क्या है? आई मीन अर्निंग सीजन आपने देख लिया, इक्का दुक्का रिजल्ट्स बाकी हैं। आई थिंक दो तीन चीज़ें बड़ी एक्टिव रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में शामिल की जा रही हैं। वो है एक मानसून, एक अर्निंग सीजन और यूएस में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी। ऐसे में इंडियन मार्केट्स के जो अप्रोक्सीमेटली जो ट्रैजेक्टरी रहेगी वो क्या रहेगी? अभी अप्रोचिंग 8000 या फिर अभी यहाँ पे बाजार में आप डाउन साइड देख रहे हैं? अच्छा, हमारा एस्टिमेट है मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज पे होगा 7500 टू 8400 लेवल्स। दैट इज अ ट्रेडिंग रेंज जो बाजार को नियर टर्म में हम दिख रहे हैं। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अर्निंग्स में क्या क्या चेंजेस हो गया बैंक्स में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बोथ पुअर परफॉर्मेंस है। अच्छा, उसका लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई का रिजल्ट आने के बाकी है एंड वो रिजल्ट कैसा होगा will have a big impact on the total banking earnings for year ended March 16. True. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इफ यू लुक एट इट FY 15 में अप्रैल 15 में मार्केट एक्सपेक्टेशंस वाज 15% बिजनेस ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में होगा करके, बट अभी एक पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एसबीआई का रिजल्ट आया नहीं है। ऑलरेडी वी आर सीइंग अराउंड 12.9% कंट्रैक्शन इन अर्निंग्स, डी ग्रोथ इन अर्निंग्स। सो एसबीआई का रिजल्ट में भी पीएनबी जैसा नहीं है तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा बहुत झटका मिला है, तो then you will see the entire earnings growth in FY 16 for the banking sector actually coming down quite dramatically. इसका consequence क्या है next year पे? Because you are coming from a negative earnings this year, you will see a sharp earnings growth happening in FY 17 next year के लिए. So the Sensex or Nifty as a whole, you may have a larger earnings growth. So मेरा view है more than earnings growth in these sectors, it is going to be more stock specific करके movement आएगा for remaining part. That's going to be the biggest clue. एंड्रू, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? श्री, आपकी सलाह क्या होगी इस समय? जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा, एसबीआई के रिजल्ट्स जो हैं, बट एक जो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय वो ऑटो स्पेस के सामने भी है, बिकॉज एवरी डे दे रन इनटू सम ऑफ द अदर बैड न्यूज। अब केरला में भी जो 2000 सीसी प्लस डीजल व्हीकल्स हैं उनके लिए दिक्कत है। आपका व्यू क्या है ऑन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? See, passenger vehicle segment, let's not confuse it with certain kind of regulation which is coming out. वो तो consumption related है. You probably will have what I'm saying, say the 7th pay commission implementation, OROP, 7th pay commission center में implement किया तो states में भी implement करना पड़ेगा उसका effect. So you will actually see the consumption actually beginning to increase. So I still believe that there will be growth in passenger vehicles. You will also see growth in two-wheelers, etc. So that's not something which I'm worried about right now. But issues like monsoon, issues like the global growth, then also comes a point that January में हमारा crude का price था at the lowest at $28 or something. अभी तो you are back at $50. So if you look at the current account deficit and trade deficit, last I think in the month of March you have seen a figure of trade deficit at less than $5 billion, which is probably the lowest you have seen, and I don't think it can go below that. So for going forward with crude having moved up, you probably will expect to see a higher trade deficit happening and a higher current account deficit, and especially because global economy is not doing that well. हमारे exports also will not grow quite dramatically. It will remain subdued. So you have a problem from a current account deficit and trade deficit. So दो चीज हो सकता है. I don't think interest rates can come down. Second, currency weaken होने के लिए भी और chances है. Okay, so the global growth is also so crucial. And remember, by September you have that FCNR deposits of 36 billion to be repaid back. Oh, foreign exchange reserves, इतना amount of money goes back, that also would put some pressure on the rupee. So you have got enough challenges out there. So to become overly bullish, saying that index will go up quite sharply,
I don't think it is possible. ल्यूपिन एक बार फिर से अगर आप देखें ऑलमोस्ट इस दौर के नए लोज पे है, और ये प्राइस परफॉर्म, आई मीन आज को छोड़ दूं मैं अगर, तो कल ऑलमोस्ट इसने उस प्राइस को छुआ। फार्मा के साथ ये इश्यूज हैं, और इन्वेस्टर्स का थोड़ा एग्जैक्टली जो हित होता है ना, वो ऐसे इश्यूज के चलते हिट तो होता ही है। आप कई समय रुक कर कोई स्टॉक पे 10-15% कमाते हैं, और सडनली उस सेक्टर में वो स्टॉक 10-15%, 20% एक महीने में टूट जाता है। आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट है क्या इस वक्त स्पेस, इस फार्मा स्पेस में, या फिर आप मिड कैप फार्मा को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस वक्त? हमारा व्यू है फार्मा इज गोइंग टू हैव मोर हेडविंड्स देन बिग गेन्स। सो इसके लिए बिग फार्मा में देखो, सन, रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, वी आर नॉट बुलिश, so it is not a part of our topic also. Okay, where we are bullish is probably the Aurobindo, Glenmark and Jubilant Life Sciences. Then these three stocks we have been bullish for the last 6 months and better part of last 1 year also. So our view is new product launches, especially in the US for Glenmark and Aurobindo, and you will more in injectables, where your margins are also on the higher side, which will be much higher than many of the other big pharmas in the product segment, especially in injectables. That is what is going to drive these kind of companies. So it is not a sector call, it is individual stock call. And again, Jubilant Pharma baby, Jubilant Life Sciences, clearly it was beaten down, it had problems. वो problems अब sort out किया है. Actually we are beginning to see the ramp up. So again, फार्मा में भी हम सेक्टर स्पेसिफिक नहीं जा रहे, स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं। आप नजर रख सकते हैं। श्री, आप जाते जाते कोई डार्क हॉर्स रेकमेंड करना चाहेंगे फॉर आवर व्यूअर्स? Not really. We stick to our topics and उधर से हमारा recommendation होगा, not outside. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स मिलाए रखी आपने।